Everyone. Sorry. Good evening, everyone. So I am live, and I am live after so many time because I have some medical emergency in my home. That's why I was not able to do live. So as you can see right now, I have a position in BTC. As you can see right now, I am in a very good profit. So let me just explain the trade logic first, then we will do some other things. Okay. Let's move to the daily chart first. Okay. Let me just adjust the chart view. So this is the daily charts you are looking at. Okay. So as you can see, market आया है, market came from this point, फिर यहाँ पर try to break out, but एक अच्छा close नहीं आया, and wick and try and यहाँ से नीचे करके break down किया, and I took a short position. और ये जो short position है, this is not like a very big positional short position, ये थोड़ी छोटी सी short position है, क्योंकि market is not in a bearish trend. As you can see, market थोड़ा अप ट्रेंड में है, तो उस वजह से आई एम नॉट दैट मच श्योर अबाउट दिस कि ये मार्केट एक क्रैश होगा कि नहीं होगा. वेल माय टारगेट इज अबाउट 79,3400 समथिंग at this point. If market comes to this point, I will gonna book my profits. Okay, till then I'm gonna hold a bit. Okay, so this is the logic, and the logic over here why I have took the short at this point is that कि ये यहाँ पर एक support थी, as you can see. जैसे ही इस support का एक breakdown हुआ, तो I am a bit sure about this कि ये market यहाँ से एक selling market बन सकती है. Okay, और the second point you're looking at this, अगर हम देखें, so this is one shoulder, this is the head, this is one another shoulder, and this is a neckline. So this is a perfect price action in which I have taken this trade. So as you can see right now, I am in a good profit. Markets give me more than 1:2. So now I can trail my SL to this candle, to this candle's high. Okay, so let's see how it goes. As I have to inform you that this is not a positional trade. Okay, and we guys will gonna learn some new things like how to trade breakouts. Okay, so this is the trade that I have told you, and I also told you the logic behind this trade. Okay, so now I'm gonna told you the strategy how to trade up breakouts. Okay, चाहे वो either on the downside or on the upside. Okay, for this let me just install a pen. Okay, wait for a minute please.
Okay, so let's start now. I have resumed everything. Okay, पेन आ चुका है. Everything is okay now. So now the first point is how to trade breakouts. Okay, मैं आपको अपना पिछला ट्रेड बताता हूँ जहाँ पर मैंने अपना पिछला ट्रेड लिया था. Okay, उस हिसाब से मैं बताता हूँ कि मैं ब्रेकआउट्स को ट्रेड कैसे करता हूँ. So पिछले ट्रेड की प्लानिंग मेरी ये थी कि आई वुड टेक दिस ट्रेड यहाँ पर, जैसे ये वाला, जब ये वाला यहाँ पे क्रॉस हुआ था. ओके, बट एट दैट टाइम ये मेरी ट्रेडिंग विंडो पे नहीं था और ये बहुत फास्ट चला गया. जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई वुडंट टेक दिस ट्रेड. ओके, फिर यहाँ पर मार्केट ऊपर गया. इज वेरी वॉलेटाइल मार्केट. आई अवॉइड टेकिंग ट्रेड एट दिस जोन. ओके, सो मैंने यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं लिया. इफ यू लुक एट दिस पॉइंट, यहाँ पर द मार्केट स्टार्ट टचिंग मल्टीपल लेवल्स. मार्केट ने यहाँ पर मल्टीपल टाइम एक लेवल को टच कर दिया था. ओके, सो मेरी आई टेल यू कि मेरी वो कहाँ पर थी एग्जैक्ट एंट्री. इट्स एट 8400. That's my exact entry at this point. As you can see, यहाँ पर one time, two time, three, four, 5 times. At least मार्केट ने इस जोन पे 4 to 5 times. मार्केट ने यहाँ पर 4 to 5 times टच पॉइंट्स बनाए. ओके, मार्केट ने यहाँ पर 4 to 5 टाइम टच पॉइंट्स बनाए. देन आई मेक माई पोजिशन ओवर हेयर. आई कैन शो यू दैट पोजिशन ऑल्सो इन माई ट्रेड बुक. ओके, तो मेरी फर्स्ट ट्रेड पोजीशन यहाँ पर बनी. ओके, आई टुक अ ट्रेड. यहाँ पर मेरी एक लॉन्ग पोजीशन बनी एंड यहाँ से ऊपर तक गई एंड देन केम बैक, देन गो अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन. ओके, तो यहाँ तक मार्केट आया एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ माई ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी कि मार्केट यहाँ से वापस आया. स्टार्ट वंस अगेन मेकिंग अनदर टच पॉइंट्स. यहाँ पर मार्केट ने और टच पॉइंट्स बनाए. ठीक है, यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस बन गई. जैसे ही मार्केट ने इसको क्रॉस किया, आई हैव टेकन अ वन मोर ट्रेड. ओके, आई हैव टेकन मतलब यू नो आई ऐड अप माय ट्रेड. मैंने अपनी क्वांटिटी ऐड की एंड दैट्स गो अप एंड आई बुक्ड अराउंड समवेयर हियर. ओके, सो if you wanna see, I can show you my trade. Okay, if you guys don't believe me, my last trade, this is my trade right now which is going on. Something a bit profit, order history or trade history, I can show you everything. This is my sell trade. Oh, that's not the order history. I think order history. My internet is a bit slow. Okay, so yeah, here we have. This is my trade. Okay, as I told you, I have purchased on 80,400. This is first time I have purchased this. Okay, and this is a stop loss which is expired. Okay, then this is a buy limit which is also cancelled by me. Okay, then I add up the quantity at 81,100. Okay, so these both are the levels जहाँ पर मैंने quantity add की और ये सब कुछ किया. Okay, और फिर this is the point 82,521 where I sold my both quantities. As you can see, यहाँ पर 0.004 क्वांटिटी सेल हुई है. यहाँ पर 0.02 क्वांटिटी उठाई थी और यहाँ पर भी 0.02 क्वांटिटीज उठाई थी. ओके, सो लास्ट ट्रेड वाज टोटली breakout trade, the way I took breakout trades. Okay, so लेट्स एनालाइज. ये लाइव मैं ज़्यादा लंबा नहीं कर पाऊंगा बिकॉज आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स अपार्ट फ्रॉम दैट. ओके, और मेरा ट्रेन चला हुआ है तो आई ऑल्सो हैव टू मैनेज ऑल दैट थिंग्स कि यहाँ पर इसको कितने तक बुक करना है एंड ऑल दैट प्लानिंग्स. सो लेट्स मूव बैकवर्ड. मेरे कुछ और ट्रेड्स थे विच आई हैव टेकन. तो यहाँ पर दिस इज ऑल्सो अ ट्रेड दैट आई हैव टेकन इस पॉइंट पर. ओके, मैं आपको एग्जैक्ट अपनी लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ जहाँ पर मेरा ट्रेड था. आई थिंक दैट इज एट दिस पॉइंट. या दिस इज द पॉइंट. वाई दिस इज द पॉइंट? दिस इज द पॉइंट बिकॉज क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टच. ओके, दिस इज द सेकेंड टच एंड बाय द टाइम इट गोज थर्ड टाइम आई टुक द ट्रेड. मेरा एक सिंपल लॉजिक है. देखो, अगर एक रेजिस्टेंस है लेट्स से या एक सपोर्ट है. ओके, अगर मार्केट ने एक टच दिया, मार्केट वापस आई. मार्केट ने दूसरा टच दिया, मार्केट फिर से वापस आई. अगर एक सपोर्ट या एक रेजिस्टेंस पे मार्केट ने दो टच दे दिए. ओके, थर्ड टाइम जब भी मार्केट जाएंगे आई एम गोना टेक ट्रेड. दैट्स अ वेरी सिंपल ब्रेकआउट ट्रेड्स. और ये मोस्ट ऑफ टाइम दिस इज अ वेरी सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी. मोस्ट ऑफ टाइम ये होता ही होता है. एंड
For your kind information, I am a Shark Exchange 30 days challenge winner three times. April is my third time. I could have been four time, but I didn't do trading in Shark Exchange in the month of January. That's why I have an profit of 3 months. Okay, so this is the strategy. Okay, you guys got it. Let's say in a support case, it comes first time, went up, comes second time, also went up. Okay, by the third time, whenever it comes third time, I'm going to take a trade. I have ISL of 300 points and going to take a target of almost 2,000 points to 2,500 points. Okay, that's my simple logic, that's my simple theory how I trade breakouts. So here I also have a position at this point. I think yeah, I have a position at 76 to 92. I have a position at 76 to 92. Okay, and this is the place where I have to add quantity, but just because of some reason I was not able to add up quantity over here. Then I add up my quantity at this level, and I booked it somewhere here, 78 550 something. I booked that profit. Okay, so as you can see, I have taken this trade at 76 300. Okay, and I exit that trade at 78 550. Also did a pyramiding in between. Okay, and also missed one time where I have to pyramid. Okay, so this is how you trade. This is how you scale when you are right. Okay, and I missed some of the opportunities. I'll show you that also. So this is this is one trade. You know, this is the selling trade. This is the selling phase that I have missed. ओके, यहाँ पर सिर्फ मेरी एक पोजीशन यहाँ पर थी. ओके, वो भी मैं आई थिंक शायद ये जब मार्केट वापस आई तो यहाँ कहीं पे जाके वो मेरी निकल गई. ओके, अदरवाइज आई हैव ऑल पोजीशंस. ये दिस इज आई हैव अ बिगेस्ट रिग्रेट ऑफ मिसिंग दिस मूव. ओके, बाकी आई ऑल्सो हैव पोजीशंस ओवर हियर. यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोगों से मिस्टेक्स नहीं होती है. मिस्टेक्स इज अ पार्ट ऑफ अ गेम एंड दैट्स हाउ यू लर्न थिंग्स. ओके, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, सो मिस्टेक्स इज अ पार्ट ऑफ अ गेम और मिस्टेक्स हमेशा होती रहेगी. ओके, आई ऑल्सो हैव अ वन बुलिश पोजीशन ओवर हियर एट दिस पॉइंट. I think at this candle, it went up 1,000 point in my favor, but I was not, I don't usually book 1,000 points. My plan is that market will gonna consolidate and break this level, but market didn't do that. Then I have to book that profit around somewhere here, and just because of my bullish position, I also missed this selling trade. Okay, but I try to cover that trade over here, but just because of some reason I got one SL over here. Just because of some reason I was not able to take re-entry of this trade. Okay, so this is a very simple thing how I trade breakouts. So I'll explain you one more time, then I'm gonna end this stream. Okay, so let me take you to the total black screen, where the screen is totally black. So it's going really good. So yeah, here I can explain you very well. Okay, so let's say this is the support, this is the resistance, and this is the support. ठीक है, अब ध्यान से देखो. ठीक है, एंड मार्केट अभी यहाँ पर है. ओके, द फर्स्ट टाइम मार्केट यहाँ से आया आया एंड मार्केट ने फर्स्ट टाइम इस चीज को अप्रोच किया. ठीक है, आई एम नॉट गोना टेक दिस ट्रेड. ओके, फर्स्ट टाइम जब भी मार्केट किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे जाता है मैं बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेता हूँ. ठीक है, मार्केट कम्स डाउन, मार्केट ट्राई अगेन टू गो. सेकंड टाइम भी जाएगा तो वो भी मैं नहीं लूंगा. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग द ट्रेड सेकंड टाइम. मार्केट रिजेक्ट्स. ओके, एंड मार्केट ट्राई टू ब्रेक इट थर्ड टाइम. बाय द थर्ड टाइम I am going to take this trade, okay, at this point, stop loss of 300 points and target up to 2000 points. Minimum target that I booked is about 2000 points. उससे पहले या तो फिर मेरा ट्रेलिंग ऐसे चला जाएगा या फिर मेरा स्टॉप लॉस चला जाएगा. दैट इज द टू सिनेरियोज जो होते हैं. ठीक है, तो यू गाइस गॉट इट. कोई भी सपोर्ट है या कोई भी रेजिस्टेंस है, पहले दो टच पॉइंट्स देखने हैं. एक टच पॉइंट ये है, दूसरा टच पॉइंट ये है. ओके, जैसे ही उन टच पॉइंट्स को मार्केट तीसरी बार क्रॉस करने की कोशिश करेगी, यू हैव टू टेक अ ट्रेड. दिस इज अ वेरी सिंपल ब्रेकआउट स्ट्रेटजी. ओके, सो उसमें 300 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस रहेगा एंड 2000 पॉइंट्स का आपका टारगेट रहेगा. दिस इज अ वेरी सिंपल स्ट्रेटजी. इफ यू गाइज
want to back test, you guys can back test. अब मैं बोलूंगा आप लोगों को कि आप लोग जाओ और इस स्ट्रेटजी को देखो, जहाँ पर भी प्राइस 2 बार आया है, जब वहां से प्राइस 3rd बार किया है, तो हाउ इट रिएक्ट्स. ओके, गो एंड डू योर ओन बैक टेस्ट. अगर आप बैक टेस्ट करोगे तो यू गाइज विल हैव अ मच मोर कॉन्फिडेंस दैट यू हैव राइट नाउ. और जब उस कॉन्फिडेंस जब आप बैक टेस्ट करके कॉन्फिडेंस लाओगे और उस कॉन्फिडेंस को रियल मार्केट में टेस्ट करना स्टार्ट करोगे, जब आप रियल मार्केट में प्रॉफिटेबल, मतलब यू आर गेटिंग, यू विल स्टार्ट हिटिंग योर प्रॉफिट्स, तो आपका कॉन्फिडेंस खुद पर खुद बढ़ता जाएगा और आपकी ट्रेडिंग बहुत इंप्रूव होती जाएगी. ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट कि आपने कहीं से स्ट्रैटेजी सीख ली या कुछ ऐसा कर दिया. बाय द टाइम यू आर नॉट अप्लाइंग दैट स्ट्रैटेजी ऑन योर ओन वे, और आप उस स्ट्रैटेजी को देख नहीं रहे हो कि इसके क्या फ्लॉज है, क्या प्रोज है, ये सारी चीजें नहीं देख रहे हो, तो आई डोंट थिंक कि एनी स्ट्रैटेजी इन दिस वर्ल्ड गोना मेक यू अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर. ओके, so this is the live for today. I am live after a very long time, like 10, 10, 15 days. Okay, so I'll try to come live every day. Okay, uh, so we will learn new concepts every day, and I'll also show you my PNL of the last 3 months. I have made around 4 5x of my capital in last 3 months. So that's a huge achievement for me. And in last I say almost 8 9 days, I have doubled my account. So that's how I trade. Thank you so much for watching, and I'll update the status of this trade, whether I have booked this trade or I got a SL, on short video clips, on shorts, where you can see this. So thank you so much for watching. Have a nice day.